Good morning to all of you. My name is Samrat Keshari Mishra and welcome to Unacademy. Mosweta Anima achanti and she has qualified OPSC mains examination and will continue mock interview for her. So Anima, are you ready? So can we start the interview? Yes, sir. Okay. So please introduce yourself. Sir, I am Anima Soreng from Sunderland district. I have completed my graduation from SU Men's College, Raurkela, and completed my post-graduation from Government Autonomous College, Raurkela. And currently, I am working as a teacher in Kids English Medium School, Software. And my hobbies are listening to music, singing scripture songs, and graduation. Currently you are working as a teacher, right? Yes, sir. Where are you working? Where are you working? Sonpur. In Sonpur, sir. Okay, you are teaching to which standard students? Class 2 to 4. Okay. So what are your optional papers? My optional papers were education and sociology. Education and sociology. Okay. What is your highest educational qualification? I have done my post graduation. Then after that, I had appeared for NET and for NET. UGC NET, right? Yes, sir. Your UGC NET qualified in education. Yes, sir. Okay. So you have completed your masters in education. Yes, sir. From which college? From Government Autonomous College, Raurkela. Okay, so tell me something about your family. I have my both parents and I have two other brothers and sisters. I am the youngest. Right. So as a teacher, how do you see the NEP, new education policy? Education is also one of your optional and you are working as a teacher. So how do you see NEP, new education policy, as a reformative approach by the government of India to reform the Indian educational system? Yes, it is a good approach by the government of India, and it will include vocational education, which will be helpful for all of us, especially for new generation, because we can see nowadays unemployments are growing in high rate. So it will be very helpful because of implementation of vocational skills. This much implementation. Right. So tell me some of the reasons for which the dropout rate is more, especially in the Quebec districts of Odisha. What are the reasons behind high dropout rate in the school education? Students are enrolling to the schools, but the rate of dropout is more. Yes, poverty and lack of knowledge towards the education, and they don't know the importance of education. One poverty, electricity. Okay, what reformative steps can be taken for this? Reformative. So first we will give awareness about the importance of education, and after the completion of education, then we have to ensure that they will get some work, so that after education they will not be remain unemployed. Because of that only some people say that after having good education they are also remain unemployed. So that's why we have to give awareness about this education. Okay. What are the social issues that the LGBTQ community are facing currently in India? Poverty, illiteracy, and they are not able to come to the mainstream of the society because of shyness and lack of confidence also in some areas.
currently not remember. What do you mean by women empowerment? Women empowerment give education or power to the woman so that she can think or work independently. Any schemes by the government of Odisha or by the government of India to empower women? Not remember. Are you aware about Mission Shakti? Yes. What is it related to? Mission Shakti means like in the village area they are women are in one group and some benefits they are getting from it. Okay. What are the causes of high rate of urbanization and what are the negative consequences of it? As a student of sociology, how do you see urbanization? Nowadays people are coming, most of them in search of work from rural area to urban area, and now it is so much becoming places not found in urban area and not coming to the point. What are the causes of urbanization? Because in the industrialization, then Are you aware about the definition given by the census report? What is the definition of urbanization? Not known. Okay. What is a smart city? definition in particular, the point I cannot. Smart city you are not able to recollect, right? Okay. As a bureaucrat, what is going to be your view? You will focus more on rural development or on urban development? First I will see rural and urban. Why rural development? First, because it is No problem, please continue. because in rural people are not aware of education and whatever government schemes are coming, they are not aware of that. So first of all, I will work upon it, then I will come to the other. What reformative approaches you will take? So now I am not. Okay. You have qualified UGC NET, right? Yes, sir. What Yes, is sir. your view related to online distance education during the pandemic time period? Are you aware It about was this? very great. Yes, sir. Okay, Yes, please sir. continue. I am aware of the distance education. Because it is very helpful because in like me, I am from rural area and because of this online education or distance education, we are very much benefited from this mode of education and we are able to get some quality education from online or distance education. Okay. So, does education have any provision? Is there any provision for education in the Constitution of India? Yes, sir. What are the provisions? This And for children up to the age of 14 years. which article? So 21A. 21A. Was it originally there or it was Not, not aware? and it is at Any other article? Is it a fundamental right? yes, sir, fundamental. Fundamental right. Apart from fundamental right, ଆଉ କୋଉଠି education mention ହେଇଛି କି? So not remember.
Fundamental duty, DPSP. Okay, no problem. Are you aware about Vishaka guidelines? No, sir. No, you are not aware about it. No. Okay. Yes. Physical health. Are you aware about Radhakrishnan Commission, University Education Commission? Yes, it was constituted in 1948. What does it related to? It is related to Kothari Commission. Kothari Commission. Commission. Yes, it came in 1953, but here only remember once I. Kothari Commission 1953, no, it was in 1964. Mudaliar Commission. 1952. Mudaliar Commission. No. You are a teacher, education, you are UGC net qualified in education. Education is also one of your optional paper. Okay, no problem. No problem. So specifically coming to sociology, what are different social problems that the tribal population are facing in the KBK regions? Yes, transportation, one, transportation is Only not social issues, only social problems, not economic or any other, only social issues. they are not able to mingle with the mainstream and Then not able to. you're not aware about it. Okay, specific social issues women are facing in your region. Social issues women are facing in your village, let's see. They are not able to go for higher education. They are studying up to 10th, but they are not going for higher education. And Only education related issues. Any other issue related to health, sanitation, empowerment, yes, social empowerment, political empowerment, representation of women. Okay, what is right to equality? irrespective of caste, religion, gender, all will get the chance of equal right. It is mentioned in which article of the Constitution of India? 14. Article 14 is also all about equality before law and equal protection of law. Are you aware about the difference between these two? Equality before law and equal protection of law? No. No, I am not aware about it. Okay. Yeah. So are you aware about the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act? Yes, I am aware, but now I cannot. And not able to recollect it. Yes. What are your hobbies? So gardening, listening to music, and sometimes singing spiritual songs. Gardening, then singing song. Listening, yes. Okay. What is your view related to Hindustani vocal music? So I am not about this. Jani nahi. Only the I sing. Who is your favorite singer? Sorry? Okay. What is the latest song by him? I have not known yet.
So thank you very much, Anima. This is the end of your interview. Let's discuss about some of the feedbacks that I have. Right? Yes, sir. Most important part. ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ସର କହୁଛନ୍ତି, still you need reform. Posture, gesture and voice modulation, I think physical environment that will be fine inside the interview hall. But apart from that, ଆପଣଙ୍କ educational background ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, you are working as a teacher in Sonpur, right? And education is also one of your optional paper. You are also MA in education. You are a UGC NET qualified in education, right? So that is why you have to aware about the educational reforms in India. कौन educational reform होइछि क्वेश्चन लिखନ୍ତୁ, जहाँ जहाँ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ जो कमिशन ମାନଙ୍କ ଉପରେ କହିଲି, कोठारी कमिशन, मुदालियर कमिशन, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सर्वशिक्षा अभियान, ड्रॉप आउट रेट कहीं अधिक, ये विषय रे पढ़िबे. अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन गोटे पूर्णांग शिक्षार ना शुणी, श्री अरविंद फोकस ऑन इट, पूर्णांग शिक्षा. हाँ, पूर्णांग शिक्षा रे टीचर मानकर रेस्पॉन्सिबिलिटी भूमिका कौन हवा दरकार, अभिभावक मानकर भूमिका कौन हवा दरकार, ये सब देखिए. एवं इंडिया रो एंशिएंट एजुकेशनल सिस्टम एंड द करंट एजुकेशनल सिस्टम कौन कौन रिफॉर्म दरकार देखिए. रिफॉर्म व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई, जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ुଛନ୍ତି, एनसीईआरटी बुक पढ़ुଛନ୍ତି, जो मैंने सीबीएसई बोर्ड रे पढ़ुଛନ୍ତି, कौन कौन रिफॉर्म दरकार, व्हाट आर द डिफरेंस, स्टेट बोर्ड रे हमको कौन एक्स्ट्रा जिनस ऐड करबा दरकार, या ऊपर देखिए. रिसेंट स्कीम एजुकेशन रिलेटेड देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. देन सोशियोलॉजी रो आपण मिनिमम किछि जिनस कोन डिसीजन मेकिंग, यू लैक इन डिसीजन मेकिंग. मोटे क्वेश्चन आपन को डिसीजन मेकिंग रिलेटेड पचारली कि अर्बन डेवलपमेंट ना रूरल डेवलपमेंट को आपण इंपोर्टेंस देबे. मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होची तो डिसीजन मेकिंग रो क्वेश्चन आसे, यू कैन नॉट से कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट. आपण जेतबे क्वेश्चन आसुची कि फैक्ट फिगर रिलेटेड कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पचरा जाउची, सेठी हमें कहि परिबा कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट. बट डिसीजन मेकिंग यू हैव टू टेक द डिसीजन वेदर in favor of or against the particular statement, right? मु कहली रूरल डेवलपमेंट को इंपोर्टेंस देबे ना अर्बन डेवलपमेंट को इंपोर्टेंस देबे, दैट इज अ सेपरेट मैटर कि अर्बन और रूरल डेवलपमेंट ऊपर आपनकर होलिस्टिक नॉलेज अछि कि नहीं. तो आपण गोटे को फोकस करिवे एवं काहे की कहबा को चाहउछन रूरल डेवलपमेंट को बा काहे की करबा को चाहउछन अर्बन डेवलपमेंट, यू हैव टू सब्सटेंशिएट इट, एको सब्सटेंशिएट करिवे. बुझि पारले. मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन केबे भी छाड़िबेनी, जदि छाडुछन ताले गोटे बहुत नेगेटिव इंप्रेशन रहबो आपन को ऊपर बोर्ड रो, हैला. डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन इज अ मस्ट. देन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, एजुकेशन जहाँ जहाँ कहली ताको पढ़िबे. देन कमिंग स्पेसिफिकली टू सोशियोलॉजी रे मिनिमम सोशल इश्यूज जहाँ देखुछन, सोशल इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन, सोशल इश्यूज फेस्ड बाय शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, सोशल इश्यूज फेस्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी, ये सब को अपन डिस्कस करिवे. लेट्स से सोशल इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन, सो यू हैव टू टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन. A woman faces discrimination starting from the mother's womb to the tomb. So the childhood of a woman is completely regulated by, or it is guided by the parents, the father or by the brother. Again, the adolescent is controlled by brother, the married life period is controlled by husband, the old age is controlled by the son. So the entire life cycle of a woman is completely controlled by a male. बुझी पारछन्ती. So you can show this patriarchal statement, देखै परिबे कि how the society is patriarchal in this regard. यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे. ट्राइबल इश्यूज मान डिस्कस करूँ. ट्राइबल पॉपुलेशन कौन कौन प्रॉब्लम फेस कर, मोस्ट इंपोर्टेंट आइसोलेशन, हेल्थ केयर इश्यूज, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज, सो दे आर नॉट इन द मेन स्ट्रीम. देन देयर इज आल्सो द factor of LWE, left wing extremism, those who are creating a romantic illusion in their mind and they're attracting the tribal population. Tribal population is joining their hand with the LWEs. Nowadays they're working as suicide bombers. Then या व्यतीत जदि हम देखिबा, they are also working for the terrorist outfits. ड्रग अब्यूज, prostitution, ये सब ऊपर डिस्कस करिवे. these are different social issues. नेक्स्ट कमिंग टू social issues in your region, आपन रीजन में जहाँ जहाँ फेस कर social issues जमती हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, एम्पावरमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एम्पावरमेंट ऊपर डिस्कस करंतु. एम्पावरमेंट रिलेटेड स्कीम जहाँ जहाँ अच्छी लाइक मिशन शक्ति कथा कहले आपन को ता ऊपर पढंतु. देन प्रोटेक्टिंग वुमेन्स लाइफ, जमती वर्तमान गवर्नमेंट करथिला गोटे स्कीम थिला हमर सुनिथिबे, सुकन्या समृद्धि योजना र ना सुनिथिबे, सुकन्या समृद्धि योजना र ना सुनिथिबे. देन अदर स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन,
वुमेन मान एजुकेशन डेवलपमेंट पाई हेल्थ केयर डेवलपमेंट पाई एडोलेसेंट गर्ल मान डेवलपमेंट पाई बा प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन लाइक प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना ये सब स्कीम सो जहाँ जहाँ स्कीम अच्छे रिलेटेड टू वुमेन जहाँ जहाँ स्कीम अच्छे रिलेटेड टू रूरल एरिया स्कीम्स रिलेटेड टू अर्बानाइजेशन स्मार्ट सिटी कहले कौन बुझुंट डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट विलेज then infrastructure related issues in rural area 73rd constitutional amendment act 74th constitutional amendment act smart village कौन and infrastructural development कौन हवा दरकार what are the use of information and communication technology for rural development for urban development infrastructural development हम urban area रे कौन कौन चाहूचे ये सबू पॉइंट को आपन को पढ़िया पड़ो सो एजुकेशन जहाँ जहाँ मुझे पॉइंट कहली भावुची होलिस्टिकली आप नोट कर नौकरी सो एजुकेशन ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल मोस्ट इंपोर्टेंट आपन एजुकेशन बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस इन एजुकेशन यू आर वर्किंग एज अ टीचर यू हैव यूजीसी नेट क्वालिफाइड एंड एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ योर ऑप्शनल तेणु एजुकेशन मैक्सिमम क्वेश्चन आसो सेकेंड हाईएस्ट क्वेश्चन आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल डेफिनेटली आसो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन कथा कहली जमी डिसीजन मेकिंग को चेंजेस जहाँ जहाँ आने दरकार डिस्कस करें बुझीपारे यही टॉपिक को पढ़ो केबे अच्छी एग्जाम केबे आपनकर इंटरव्यू अच्छी सॉरी ठीक है सो यू हैव टाइम सो ये टाइम पीरियड रे प्रिपेयर करंतु भलो भाबरे एंड वी विश ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम Unacademy वी आर हियर टू असिस्ट यू इन केस एनी प्रॉब्लम यू नीड एनी असिस्टेंस यू कैन कम बैक टू द टीम Unacademy राइट यदि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन अछि पचारिबा को चाहउचंती ताले पचारंतु So decision making time means both the positive negative both add करि पारे no गोटिए पॉइंट आपन कहबे आपन लेट्स से रूरल मु कहूची कि स्मार्ट सिटी दरकार ना स्मार्ट विलेज दरकार लेट्स से यू चूज स्मार्ट विलेज तो स्मार्ट विलेज फॉर रे ही कहबे नेगेटिव पॉइंट एठी किछि कहबार नै जहाँ को आपन सपोर्ट करचोनी तार पॉजिटिव पॉइंट गुडा को केवल डिस्कस करियो बुझि पारले नेगेटिव पॉइंट एठी किछि डिस्कस करिवार नै जदी स्पेसिफिकली क्वेश्चन पचरा जाउची अबाउट द लूप होल्स अबाउट द कॉन्स देन यू हैव टू डिस्कस अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल तो मो हॉबी गार्डनिंग सो रिलेटेड टू देखो गार्डनिंग हॉबी रखि चंदी फाइन लेट्स से आपन को क्वेश्चन पचरा गला रंगणी फूल को ऋतु रे होय जिनुया फूल को ऋतु रे होय ए टाइप रो क्वेश्चन आंसर दे परिबे बाकी जे गार्डनिंग रो स्पेसिफिक क्वेश्चन माने पचार देले टिपिकल क्वेश्चन तो हॉबी ऊपर क्वेश्चन आसे हॉबी आपन को प्रिपेयर होगा पड़िबो से विषय रे किछि किछि पचरा जीवो क्वेश्चन हॉबी ऊपर गोटे हॉबी कोंदु बेसी हॉबी कोंदु नि गोटे ही हॉबी कोंदु लेट्स से आपन सॉन्ग कहले मु आपन हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक ऊपर पचाली यू हैव टू आंसर इट आपनकर फेवरेट सिंगर ऊपर पचारिली सिंगर ना त कहिदरे ठीक अछि बट लेटेस्ट सॉन्ग जानि नांदी तो से आपनकर फेवरेट सिंगर केमति हल तो जदी भी से आपनकर फेवरेट सिंगर यू हैव टू नो अबाउट एटलीस्ट सम इंफॉर्मेशन यू शुड हैव टू बी रिप्रेजेंटेड बिफोर द बोर्ड ठीक अछि तो मिनिमम इंफॉर्मेशन रहबा दरकार हम पाखरे बोर्ड पाखरे रिप्रेजेंट करिया पय आउ किछि क्वेश्चन तनो गोटी हॉबी रखंतु सिलेक्ट करिकि से हॉबी ऊपर टिके काम करिकि जिवे जदी हॉबी अछि ठीक अछि जदी हॉबी नाही आपण रिप्रेजेंट करचंती ताले ताकू ता ऊपर टिके पढि के जानतु मिनिमम इंफॉर्मेशन रखि के जानतु आउ किछि क्वेश्चन सर जो दिन इंटरव्यू हो जो बायोडाटा फॉर्म ता डाउनलोड करबा पड़े हां बायोडाटा यू हैव टू सबमिट बायोडाटा आपन को सेठी सबमिट करिया पय पड़ियो बोर्ड रो इंटरव्यू पूर्व रो आपन को सेठी गोटे टाइम देथिबे से टाइम रे पहुंचिया को पड़ियो यू हैव टू सबमिट द बायोडाटा फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो आपन को सेदिन सब डॉक्यूमेंट नेकी जिवे प्लस आपन को बायोडाटा सेठी आपन डिपॉजिट करियो बिकॉज़ बायोडाटा रे व्हाटएवर यू विल राइट द क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस विल रिवॉल्व अराउंड दैट जहां लिखिथिबे आपन बायोडाटा ना सेथुरु ही मैक्सिमम क्वेश्चन आछो बुझि पारले special achievement तो नहीं special तो सेट छाड़ दे not required special achievement is not important जदि किछ अच्छी achievement you have then you can write it even you have qualified UGC net you can put it there UGC net qualify करते ताको लिख परिबे हां special achievement लिख परिबे जदि आपण किछ डिबेट कंपटीशन क्विज कंपटीशन सॉन्ग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करचंती जदि किछ बही लिखिचंती एज अ टीचर जदि किछ कविता बा गप लिखिचंती एको मध्ये स्पेशल अचीवमेंट रखि परिबे इफ यू आर ए सोशल वर्कर जदि किछ काम करचंती फॉर द सोसाइटी ताली ये सब स्पेशल अचीवमेंट रखि परिबे जदि नाही देन यू कैन कीप इट ब्लैंक बुझ पाले आउ किछ क्वेश्चन यस सर यस थैंक यू फर्स्ट टाइम इंटरव्यू सर बस नहीं किसी व्यस्त होबार नहीं सो बी कॉन्फिडेंट
So already पढ़ी you have prepared for a longer time period, 1.5 year 2 year धरिके पढ़ी आपण. So you have given your best, so nothing to worry about. Practice करके जानतु, prepare ही के जानतु, be confident, and we wish you very all the best. Thank you, जब sir. किसी assistance दरकार पड़े, you can come back to Team Unacademy. Okay. All the very best. Thank you very much. So this is the end of the session. Thank you. Thank you so much.